हाय गाइस, अपनी सच टीवी में मैं हूं नौरीन और मेरे साथ है सलीमा। तो आज हम क्या लेकर आए हैं इनके लिए? आज हम लेके आए इंडियन क्या ये सॉरी इंडिया बाउंडलेस। व्हाट मेक्स इंडिया सो बाउंडलेस? या वैसे जो बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में जो दैट मेक्स देम सो बाउंडलेस। तो वीडियो देखने के बाद ही हम बता सकते हैं क्या है। Cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of nation, and the great grandmother. यार ऐसे नज़ारे ना, oh my god. It is an idea that is immortal, an emotion that cannot be captured. It's a thought that is embraced, and it's a way of life that is cherished. Wow. The values and ideals of being Indian migrate the oceans. They celebrate the culture of diversity, yet are unique and personal. We take you on a journey that unravels how and why India pulsates in the heart of the world. Through the stories of ordinary people, we explore how the soul of a nation exists outside its own boundaries and what makes India so boundless. A place in the heart of the world. On a beautiful September morning in 1893, the city of Chicago hosted the first ever World's Parliament of Religions. The erudite Swami Vivekananda from India mesmerized the global audience with his Vedic notion of universal brotherhood. In the 20th century, Mahatma Gandhi's principles of truth and non-violence drew global attention yet again, inspiring leaders like Martin Luther King and Nelson Mandela. These are significant chapters in India's soft power narrative, a narrative that over the years has grown into a grand tale. Hi there, New York City. We do have lots of beautiful sunshine for you. Today, we're in the city of New York, trailing the thread of this narrative. Whatever culture you come from, whatever you look like, whatever part of the world, you want to be happy. And India has spent thousands of years refining the methods to enter into that space inside. But while spiritual seekers have often looked to India to provide them the tools and technology for well-being, today we find ourselves tracing this narrative in unexpected quarters. We're heading to Silicon Valley in California, home to some of the largest tech corporations in the world. We work in fairly demanding jobs, and much of what happens around the Googleplex is really innovating and solving some big problems out there using technology at scale. But in the midst of all of this, the most important technology that we all have access to, all 7.1 billion people, is right here. I call it our inner net, which is our body, our mind, our breath, our consciousness. Drawing from his Indian roots, Gopi instituted Yoglas, a yoga and meditation program for Google employees worldwide. So while Google is helping the world to connect on the outside, the power of this great Indian internet helps Googlers to reconnect within. For centuries, yoga has been known to harness the faculties of the mind, body and soul, providing a holistic approach to a being. On December 11th, in 2014, the United Nations General Assembly recognized the benefits of this timeless Indian practice and, on the behest of the Indian Prime Minister, declared June 21st as the International Day of Yoga. Over 150 million people across race, religion and continents came together
and wrote a chapter in India's soft power narrative. Yoga had founded a universal language. हम भी योगा स्टार्ट करेंगे. हाँ मुझे भी श्योर है यार कसम से. But cutting across the barriers of language is yet another compelling chapter in the story of India, Bollywood. Today, we have trailed the thread of the Bollywood narrative to Stuttgart, the nerve center of the German auto industry. तुम पास आए Oh. यूं मुस्कुराए. It was कुछ कुछ होता है, and this movie opened the doors to the Bollywood world, and so we both one movie to the other, and Shahrukh is the best. René Lazar is a Shahrukhi, as the die-hard fans in Deutschland are called. वाह यार. Like them all, neither he nor his father Branko know Hindi, but thrive on the magic of Bollywood films that give them license to laugh, cry, and love with abandon. तो ये गाना वैसे ना हर जगह चलता है. तो हाँ यार ये है. Such is their passion that on weekends, shot by shot, the Lazar family meticulously recreate their favorite Bollywood musicals. Oh, wow. Okay. Ja. Jetzt gehst du rüber. Seriously. Not surprisingly, the German Shahrukh has taken social media by storm, notching up more than Oh, wow. 500,000 hits. The exuberant song and dance fare that Bollywood offers knows no nationality. Glitzy award functions, festivals and premieres tour to countries as diverse as South Africa, China and Spain. The overwhelming response from the non-diasporic community only proves that Bollywood has travelled to their hearts and souls. But India boasts an amazing wealth of soft power resources. So today, we have set out to explore how Indian food has made inroads on the gastronomical map of the world. My name is Wahiguru. I'm a Sikh, I'm white, and here I am in San Francisco serving dosas, which is a South Indian food. Oh, So while wow. Waheguru Singh is spicing up the streets of San Francisco with South Indian dosas, we discover that in Britain, the Punjabi chicken tikka masala has found a place of pride on almost every pub menu. Lovely yaar. Indian food in UK is actually very, very famous. There were almost about 10,000 curry houses, which is quite a feat to have in a country like UK, which is such a small island. The food we do is basic and simple, but a good food. A pav bhaji, just a basic pav bhaji from my main Yeah, dishes like such chole a bhature, necessary to which is such a present, Delhi yeah. thing. People love it. Across centuries, India's narratives and beliefs have enriched cultures even while absorbing and assimilating from others along the way. stories. Buddhism is one of the most powerful ideas to have emerged from Indian soil. It traveled to southern and central Asia with monks and scholars and continues to endure there, dwelling in their scriptures, sculptures, and souls. Buddhism is arguably the most powerful idea to have emerged from India. And an enduring influence. We have this Hindu-Buddhist tradition, very strong tradition. Then centuries of Islamic influence, and then Western influence. I can't think of any other major civilization which has got all of that. So in cultural terms also, we are fabulously endowed. Over the years, Indian art forms, festivals, and customs have colored the culture and calendar of many countries around the world. The joy and spirit of togetherness that they represent have bound communities that come together to observe significant Indian festivals like Diwali that are celebrated even in the White House and 10 Downing Street. Behind this diversity of life is the Indian diaspora that has gradually grown in size and importance. They hold key posts and influence government policies in countries where they live, even as they nourish their roots back in India. So we are everywhere in some way confronted with a little India now. The
very hard to escape the magic of being Indian. For the real wisdom of India is in seeking to conquer the world through love, service, and harmony. It's the bhav, it's the feeling of connection. It seemed like India knew something that nobody else knew. वाओ यार, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी ना. सच में there is a place in the heart. हाँ सच में यार, आई मीन लाइक मजा आ गया वीडियो को देख के. आप कुछ भी देख लो, लाइक उसके फेस्टिवल्स देख लो या बॉलीवुड को देख लो, बाकी प्लस यार आई लव योर मतलब इंडिया के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो तो भाई चाहे वो ओकेजन्स हो, इनके ये पूरा प्रॉपर पूरी कम्युनिटी को जो ना वो टुगेदर करते हैं साथ, मतलब दिस इज व्हाट इंडिया इज. और अट्रैक्ट करता है, लाइक हर किसी को अट्रैक्ट करता है, नो डाउट. एंड है ना, इंटरनेशनल वालों में मैंने भी ये ज़्यादा नोट किया है कि वो है ना इतना खुश होते हैं, उनकी सारी चीज़ को वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, और वो करते भी हैं. लाइक चाहे वो डांस हो, उनका पूरा गेटअप हो, ट्रेडिशनल ड्रेस हो, एंड उनका या कोई फेस्टिवल है, इवेंट है, उसमें इन्वॉल्व होना, उस चीज़ को समझना. और इवन वो लोग जब हिंदी बोलते हैं मतलब क्यूट लगता है, उनका एक्सेंट क्यूट सा लगता है. और वो लोग लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहाँ पे इंस्पायर होते हैं, जैसे वो SRK का बताया उन्होंने, वो एक बंदे का म्यूजिक मतलब कॉपी करना, सेम जगह, सेम प्लेस, सेम एक्शन, लाइक टोटली. हाँ यार फैंस है भाई, शाहरुख खान के फैंस यार. और भी बहुत सारी ऐसी इंस्पायरेशन वाली चीजें होंगी जो लाइक इसमें इतना नहीं कर सके, हमें दिखा सके, बट है ना ओवरऑल ये वीडियो देखने के बाद जो दिल में एक खुशी सी आती है ना, एंड अच्छी सी फीलिंग्स आती है, वैसा जैसा लाइक फील होने लगा है वीडियो को देख के. बहुत ही अच्छा था यार, एंड नो डाउट वो सही बोल रहे थे. इवन फूड्स का तो इनका इतना अच्छा खासा चलेगा, लाइक जो आपका बेस्ट. और क्या था, और क्या मुझे याद नहीं, लेकिन डोसा वगैरह साउथ इंडियन फूड बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा. बाहर इंटरनेशनल में लाइक अपना बेस्ट जो आपका वहाँ का फूड है वो आप स्टार्ट कर लो, आपकी बिजनेस क्या चलेगी. लाइक जिस तरीके से वहाँ UK का बताया, वो एक सेक बंदा था जो उसने ना डोसा लाइक वहाँ का इंडियन फूड बनाया, एंड वाओ यार, लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे, चेरिश करते हैं यार चीजों को. वहाँ पे इंटरनेशनल मतलब हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पे रेसिज्म है और ये सारी चीजें, लेकिन बट दिस नॉट ट्रू. मतलब लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं यार दूसरे. और इंडिया में जो चीज आखिरी में बोली थी डाइवर्सिटी, मतलब रिलीजन भले अलग है या सब कुछ अलग है, बट दे आर वन, मतलब यूनिटी वहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा है. मतलब ये चीजें जो है ना लिटरली दिल को छू लेती है यार. हाँ, तो वो स्टार्टिंग में भी एक स्टार्टिंग में नहीं, लाइक मिड में भी एक बंदा कहता ना, कौन नहीं चाहता है खुश होना, लाइक हर कोई चाहता है. एंड इंडिया के पास ऐसे बहुत सारे मौके और चांस वगैरह होते हैं जो आपको है ना हर चीज़ में लाइक खुशी दे ही देती है. तो ये सब था वीडियो में, एंड सीरियसली लाइक दिल खुश हो गया हम लोगों को. वीडियो आपने जो हमारे साथ शेयर की, अगर ऐसी कोई और भी हो ना गाइस, प्लीज़ हमारे साथ शेयर किया करो, हम भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे, हम भी देखते रहेंगे, हमें भी जानने का मौका मिलेगा. सो गाइस, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.